हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का 4.2 रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी, उसके वार्मिंग अप इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? डू यू लाइक टू स्टडी साइंस? आंसर यस, आई लाइक टू स्टडी साइंस। बी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग साइंस? आंसर, द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग साइंस आर: first, we get to know about the beauty of nature and the surroundings that we live in. Second, it makes us aware about diseases and various natural calamities so that we can take precautionary measures. Third, we get knowledge about the different phenomena taking place around us. Example, rotation of the earth, water cycle, twinkling of star, formation of clouds, etc. C. Are robots truly useful to human beings? Why? Why or not? Answer: yes, robots are useful to human beings because they can perform tasks as instructed by humans through a program and help the reducing their workload. अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डी क्वेश्चन से, हाउ कैन वी टेक हेल्प ऑफ रोबोट्स इन आवर डेली लाइफ? Answer: in daily life, we can use robots to perform our daily chores like washing utensils, cleaning of the house, filling water in the bucket, etc. Question C. Name some name some gadgets and appliances that we use in day-to-day life. Answer: some gadgets and appliances that we use in our day-to-day life are: first, refrigerator; second, washing machine; third, laptops; fourth, cell phones; fifth, air conditioners; or sixth, television. Second question say, imagine chat that you or your family members, friends, classmates has recently undergone a surgery. You you were curious and wanted to learn about his or her experience. तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, उसके बाद 10 जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए। थर्ड है, we have learned that sentence may have two, three or more sets of subject plus predicate joined by the conjunction. Each set of subject and predicate that is part of the larger sentence is called clause. तो आपको यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। ऑब्जर्व द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्लॉज कहाँ पर है आपको डायरेक्टली लिखनी है। ठीक है। तो मैंने आपको इस यहाँ पर उसके आंसर दिए हुए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 4.2 रिलेशनल स्टेप्स ऑफ सर्जरी के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है, रीड द लेसन एंड नेम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर जो यप दिए हुए मतलब 1 2 3 4 5 6, तो उसके मैंने आंसर यहाँ पर आपको दिए हुए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। चाहो तो मैं कर्सर हटा लेता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है, मैच द टर्म्स इन ए एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन बी। तो फर्स्ट का आंसर है एफ, सेकंड का डी, थर्ड का जी, फोर्थ का एच, फिफ्थ का ए, सिक्स का ई और सेवन का बी और एट का आई। आप जवाब यहाँ से मैच कर लीजिए। ठीक है। थर्ड है, फिल इन द वेब विथ वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी। सर्जरी, मेजर, कार्डी, प्लास्टिक, न्यूरो, डाविंसी और रोबोटिक्स। Fourth thing, write 3 4 lines about each of the following in your own word. First, Sushruta Samhita. Answer: Sushruta Samhita is a book. It is one of the oldest work in the world dealing with surgery. We learn from this book that Sushruta was probably one of the first surgeon to perform surgical operation, plastic surgery. First cardiac surgery. Answer: in 1893, Daniel Hell Williams, a young African American surgeon, attempted a new medical techniques in order to save a patient's life. This patient, James Carnage, was suffering from very serious knife.
The knife had cut an artery less than an inch from the heart and had punched the pericardium. Dr. Williams performed a complicated and daring operation and became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. See, first neurosurgeon. Answer. Harvey Cushing is considered to be the father of modern neurological surgery. In the early part of the 20th century, he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as distinct surgical specialty. This great surgeon dramatically reduced the mortality rate for neurosurgery from 90% to less than 10%. Harvey Cushing has successfully removed more than 2,000 tumors. Cushing's achievements was method he developed to stem blood loss by inventing the clip called silver clip or Cushing clip. डी द रोबोटिक सर्जरी। उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिलिंग इन द गैप्स इन द टेबल और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। मैंने उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो कर्सर हटा लेता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। B. Adjective that have more than two syllables. Long word take more and most before them from comparative and superlative degrees. तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, तो नेक्स्ट देखते हैं गिव द कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव नाउन। आपको पॉजिटिव दिए हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आपको लिखने हैं। मैं उसका आंसर यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख लीजिए। 6 है, join the sentence using appropriate coordinates, but or so and A. There was lack of technology. Major surgery could not develop for centuries. Answer. There was a lack of technology, so major surgery could not develop for centuries. B. Cardiac surgery was tried in the past. Patient did not survive. Answer. Cardiac surgery was tried in the past, but patient did not survive. C. He placed his fingers into the master control. He operates all the four arms of the Da Vinci. इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ। नेक्स्ट है डी, ओपन हार्ट सर्जरी कैन हेल्प टू रिपेयर हार्ट वाल्व्स, इट कैन आल्सो रिप्लेस देम। तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ई, हार्ट पेशेंट were treated with sedatives, they did not survive. आंसर मैंने आपको दिया हुआ, जैसे कि हार्ट पेशेंट were treated with sedatives but they did not survive. Yep. These procedures can be performed through very small incisions or patient experience a number of minutes. आंसर चाहो तो आप यहाँ से लिख लीजिए। 7 में, write in your notebook an imaginary telephonic conversation between you and your family doctors. Secretary asking for an appointment to consult the doctor for the health problem you are suffering from begin with dash. तो आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन पूरा करना है, ठीक है। तो सेक्रेटरी और आपके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया हुआ है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका ही आंसर आप यहाँ से पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ पर पूरा कन्वर्सेशन जो है यहाँ पर दे देता हूँ, आप चाहो तो लिख लीजिए। जैसे सेक्रेटरी क्या बोलता है, आई राइट डाउन दिस सिम्टम्स, डॉक्टर रैनी इज फ्री टुमारो इवनिंग एट 7 PM. Should I give you appointment for 7 PM? थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.